Hello, everyone. Welcome to TLA's second live session. On behalf of TLA, I welcome you all, and I am extremely pleased to welcome Ms. Marvi Khan. For those of you who have been attending TLA's session, she needs no introduction, but let me just give a small one. She holds a bachelor's degree in economics and a PD certificate for educational leadership and management. She is a certified trainer with over 14 years of successful experience. And she is a student of mind sciences, a certified hypnotherapist, and an NLP practitioner. So she has a variety of things to recommend her. Miss Marvi Khan, please take the floor. Thank you so much, Noor. And is Afia joining us? Yes, she'll be here in a second. She has a little bit of an internet Yeah, issue. I understand the technological issues. Yeah. So, assalamu alaikum, everyone. Well, this topic, which we are going to be sharing today, is performance versus learning. It is one of the most important topics that actually I wanted to discuss with. And thank you very much, Teachers Learning Association, for setting up the stage for me to share this very topic. Assalamu alaikum, Afia. Assalamu alaikum. Well, I should have been the one to, begin to introduce you, but it's good that you've taken the floor. Great. I had some internet problem. I was unable to connect. So let's take it from there. I guess every teacher across board knows this internet issue really well, so no problem at all. Well, Afia, the thing is that today I'm not going to be sharing with you any opinion of mine, any suggestion of mine, but this soul talk will actually revolve completely around facts, and I'll share with you the research and how the cognition behind it works. But before I begin, Afia, although you are the host and I'm the guest, but I have a question for you. So may I? Of course. Well, Afia, if I ask you one thing, although there are many, 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 but if I ask you one thing, what is the sole purpose of education? हम बच्चों को तालीम क्यों देते हैं basically? I mean, there are many, of course, but if I ask you to say a few, so what would they be? Well, I believe we educate our students, our children, so that they learn to become better citizens and perform better in the society. Thank you so very much for sharing this word learn. Yes, learning is one such thing, be it the schooling system, be it the curriculum, classrooms, teachers, कुछ भी हमारे अराउंड हो हमने डिजाइन ऐसे किया हुआ बिकॉज वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू लर्न बेसिकली अच्छा क्लासरूम्स में आप क्या होता है क्या है दैट टीचर्स एक्चुअली दे गो टू क्लासरूम्स दे डिलीवर इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन करती हैं डेमोन्स्ट्रेट करती हैं और उसके बाद देन दे गिव चिल्ड्रन सर्टेन वर्कशीट्स किसी प्रैक्टिस किसी टास्क के ऊपर डाल दिया जाता है and then they are evaluated students are assessed and evaluated for that task कि वो कितना अच्छा करे अगर बच्चा क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करे it's really happy that I'm doing well students are doing well and so the teacher actually marks in fact if we talk about formative assessment system so वही performance जो classroom में हो रही होती है उसको mark कर लिया जाता है and so on teacher thinks that I'm ready to move on to the next step right so this is how the current scenario in classroom Marvi, may I just interrupt? Can you move closer to the mic? थोड़ी आवाज जो है ना वो हल्की आ रही है हम. Can you move closer to the mic? Perfect. What I can do is I just hold it. I want it to be a little smarter, look smarter, but I think I should just hold it so that I can sound. Well, this is definitely working. Perfect. Yeah. Forget about the smartness and all that, but I'm just holding it in my hand now. Well, so the current scenario is this: the teachers are happy, they are marking performance, and then they feel like they can move on to the next step. But I am actually going to be turning the table around today for all of you. Afia, I have another question for you. May I? Sorry, I feed on questions. Sure. Acha, Afia, who would you choose? I'm sharing with you two scenarios. Who would be your dream students? In fact, I would want all the audience, jitni bhi audience hame dekh rahi hai, I want them to answer this question in the comment box. ताकि हमें actual में end में you will also get the answer. ताकि we understand that what perspective do you take. So Afia Qureshi, who would be your dream student? Okay, who would be your dream student? Okay. A, someone who takes the task very efficiently, very energetically, all right, performing well in the class, scoring well, बड़ा साफ साफ प्यारा प्यारा सा काम किया हो, and then B, seems
students confused, struggling, writing and Mhm. erasing and scan writing और शायद कुछ फट भी जाए कॉपी का सफा. So who would be your dream child, dream student, a teacher's dream student, A or B? Well, it's very easy and very stereotypical because all of us as teachers would prefer to teach the student A. That involves less effort, but actually in the class, the focus or should be on be student B. However, it doesn't happen work like that. It doesn't happen. So your dream student is A, right? Yes. So वो कहते हैं ना किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ. So actually this is this scenario. All right. So before I actually share with you the very facts of research, I have to set a stage actually for two basic things, and that is because we are talking about learning versus performance or performance versus learning. So we need to be actually on the same page together कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग की बात करी और मैं किस कॉन्टेक्स्ट में परफॉर्मेंस की बात करी. व्हाट लर्निंग इज एंड व्हाट परफॉर्मेंस इज. ऑलराइट. सो वेयर डेफिनेशंस लर्निंग की बहुत सारी हैं, बट द मोस्ट कॉमनली वाइडली यूज्ड डेफिनेशन बाय रॉबर्ट स्टेनबर्ग मेरे And एक्चुअली Marvi, that was exactly what I wanted to ask you when I read the topic. I wanted to know what performance in learning is all about. एग्जैक्टली आफिया. सो लर्निंग की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट द मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन बाय रॉबर्ट स्टेनबर्ग, who's a cognitive scientist. Now very carefully, all teachers and everyone across board, listen to this one. He says learning is relatively permanent change. Now please highlight these words. If the teachers bank bana lete na, permanent change in thoughts, Behavior. behavior, and feeling of an organism, because animals also learn, plants also learn, as a result of an experience. How beautiful this definition is. Permanent change in thoughts, feelings, and behavior of an organism in terms of as a result of an experience. As Einstein says, na, everything else is just an information and knowledge, but experience, right? So it's actually quoting the same thing. So this is learning, which is long-term retention. I mean, if it is learning, it has to be a permanent change. All right. Now let's go back to performance. And performance is the act and process of performing a task or a function. किसी भी चीज को करते हुए हमारी जो act होता है उसकी effectiveness is performance, right? So now performance is temporarily fluctuation in behavior. Just imagine, learning is permanent change and performance is temporarily fluctuation. Afia, just before I move on to the exact research, I have to set another stage for you, and that is a memory model. Okay? And that is how information processes in our mind. अब इन दोनों के reference में, the information, it actually is captured by our senses. All right. Then it moves towards the working memory of the brain, जिसको आप कहते हैं short term memory. अगर attention मिलती है उसको तो. If the information Yes. that is captured by our senses has got attention by the person, then the information will move into the short term memory, जिसको आप अपनी workspace कहते हो. And then if it is processed well under certain scenarios, जो कि आज का topic नहीं है, it moves on to the long term memory. Interesting. See, so it's the sensory memory, then it comes to the short term memory, and the third thing is it moves on to the long term memory. So now, when we talk about learning, it's the processing of information into long term memory because it's the permanent change, right? But when we talk about performance, it's actually the temporarily fluctuation जो working memory में हो रही होती है, जो working memory में work table पे processing हो रही होती है information की, basically performance तो वो होती है. और टीचर्स क्या करती हैं, उस परफॉर्मेंस को मार्क करती हैं, एंड देन दे थिंक दे आर रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, which is like सबको ऐसे ही लगता है, which is like intuitively performance is the indicator of learning.
ऐसे ही है. सो वर्ब हो गया हमारा लर्निंग, और परफॉर्मेंस जो है बेसिकली बिकॉज इट्स द इफेक्टिवनेस, इट्स नाउ आई एम साउंडिंग लाइक अ नाउन टू अस. अच्छा जी, अब लास्ट इसकी जो इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है आफिया, बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिसर्च जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ. ऑलराइट, interestingly, the first part of the research says enhanced performance leads to or is a lousy indicator of learning. सो वो जो आप मार्क कर रहे थे परफॉर्मेंस क्लासरूम में, जितनी ज्यादा वो होगी, इट्स अ लाउजी इंडिकेटर ऑफ लर्निंग, उतना ये वीक इंडिकेटर है लर्निंग का. Isn't it eye-opening, Afia? I mean, we are marking performance. बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना अच्छा काम करे, and that performance जो हमारा गोल है, which is learning, उसके एक्चुअली में ऑपोजिट है. In fact, the research says that it leads to the decreased learning. Enhanced performance leads to decreased learning. So how eye-opening this is, जब मुझे पहली दफा पता चला था, I actually hated this research. Had it not the second part, मुझे ये बहुत बुरी लगी थी. I mean, what do you mean by this? If the performance, I mean, if we are not going to assess the students on performance, तो हम किस चीज पे assess करें उनको, कैसे assess करें कि उन्होंने learning उनकी हो रही है, आगे जाना है और क्या करना है. Now, ये होता कैसे है? How this happens? Had I not been the student of mind sciences, मुझे कभी पता नहीं चलता. बेसिकली होता क्या है आफिया, कि इंफॉर्मेशन आपके पास गई, राइट, टास्क इज गिवन. जब टीचर ने कोई टास्क दिया बच्चे को विद एन एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हमेशा से बच्चे को भी पता होता है जब मुझे कोई टास्क मिल रहा है क्लासरूम में, टीचर की बैक एंड एक्सपेक्टेशन है कोई मेरे से, राइट, शी वांट्स मी टू परफॉर्म, शी वांट्स मी टू डू दिस वर्क. हाउएवर, जब वो टास्क किसी एक्सपेक्टेशन के साथ दिया जाता है, इट पुट्स द चाइल्ड अंडर सर्टेन स्ट्रेस, right? And the meaning of stress is that temporarily जो आपके ब्रेन के सारे फंक्शंस हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, and all you want is to cope up with the stress. सर्वाइवल के इश्यूज के अंदर वो आ जाती है चीज, that all you want is to just, बाकी सब लर्निंग मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, I don't care, all I want is to cope up. एक एबनॉर्मल स्टेट में बॉडी चली जाती है जिसमें सिर्फ उसको कोप अप करना होता है. If I give you an example, like if I'm running, if I have to run a race, Afia, so if be I'm I mean physician, मुझे फिजिक्स की मेरी टीचर भी पसंद थी तो मैं वो एग्जांपल दे रही हूँ. Be I'm a physician कि मुझे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, ट्रैवल, सब चीजों का बहुत अच्छे तरीके से पता है. बट when I'm running a race, जब मैं दौड़ रही हूँ, कैन बाय एनी चांस मेरे दिमाग में वो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी की डेफिनेशन रह सकती है कि अगर मैं इतने कदम लूंगी ना तो मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगी? नहीं, not at all. I will only be involved in running. So when a task is given by teacher with an expectation, it puts the child under stress. Learning सारी brain की बंद हो जाती है. All the brain wants is to survive, is to accomplish something. अगर तो उसने नहीं अकम्प्लिश किया तो वैसे ही आप की नजर से चले जाइए, और अगर उसने अकम्प्लिश कर लिया है तो यू नो व्हाट हैपेंस, ब्रेन में हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामीन रिलीज होती है, जो कि बॉडी की बहुत बड़ी सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट है. वो हैप्पी केमिकल्स, दे गिव यू इल्यूजन ऑफ नोइंग. आपको लगता है मुझे आ गया, ओ यस मैंने ये टास्क परफॉर्म कर लिया, आई नो इट, मुझे आ गया बिकॉज मैं बहुत खुशी खुशी इसको कर लिया. एंड टीचर इज लाइक यस इसको आ गया, ये बहुत खुश है, शी इज परफॉर्मिंग वेल, एंड दैट्स इट. But that's the illusion of knowing. As per this research says, जो enhanced performance है, that's a weak indicator of learning. Rather, it's actually an indicator of decreased learning, because high performance on tasks, actually because of that short-term dopamine that's released in the brain to give you illusion of learning, like illusion of knowing. अच्छा, interestingly, टीचर्स भी इसी डोपामिन को रिलीज करने के लिए, इसी सेटिस्फैक्शन को रिलीज करने के लिए टास्क ऐसे प्रिपेयर करती हैं कि बच्चा उन टास्क को परफॉर्म कर सके और वो क्लासरूम में एक्चुअल में अच्छा फील कर सके अपनी परफॉर्मेंस का भी. नाउ द थिंग इज कि द मोर द टास्क इन्वॉल्व रिपीटिंग द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये जो हम बच्चों को कॉपी पे बहुत सारी, आपने इंट्रोडक्शन देने के बाद बहुत सारा सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दे देते हैं ना, कि 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस एक जैसे आए आप कॉपी में कर लो. द मोर यू आर
practice is different than learning, right? The more you are going to attempt the same type of problems, the more you are going to attempt the same type of task, it is the more it is going to actually give you the illusion of learning, the more it is going to enhance your performance, but that does not at all means that you are learning. So this is an eye opening in the first step. All right. Acha, Noor, now you are with me. So the thing is कि this is highly now this what's वो जब ये मुझे समझ में आई थी, सबसे जरूरी चीज जो मुझे पता चली, that is सबसे हाई रिस्क पे फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, राइट? बिकॉज फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि आजकल बहुत ज्यादा चला हुआ है, टीचर्स शुड मूव ऑन फ्रॉम सबमिटिव टू फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, और स्कूल्स में फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के ऊपर बात हो रही है. बट व्हाट फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, फॉर्मेटिव असेसमेंट में तो हम लोग शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को और टास्क को ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ताकि वो Hmm. कंप्लीटली टोटल सम अप कर सके एंड वी अंडरस्टैंड व्हाट लर्निंग इज. So True. actually, Yeah. formative performance by this research, formative performance जो assessment, sorry, जिस तरह की हम assessment लेते हैं, that is not at all an indicator of learning. So up till now, if teachers you have been actually taking assessment with on small term performance, so that means कि that is not an indicator of learning. ठीक हो गया So, आपका? what is the indicator then? Thank you very much for asking me this question. But before that, I have another question for the audience, right? And that is, अच्छा हम learning की बात करें, performance की बात करें. How would you call learning in Urdu? अब audience please आप comments के अंदर ये जरूर लिखिए, because मुझे आफिया बाद में बताती रहेंगी, the prettiest moderator one can ever have, कि what are you writing? So it's actually Urdu में learning को क्या कहते हैं और आप क्या कहते हैं? I mean there are many words, but what do you call learning in Urdu? As per your definition, what do you call performance in Urdu? So आप please comment box में type करते जाइए, so that हमें मिलते जाए आपके जवाब and we understand what your perspective is. चलिए आफिया, now let's move to the Huh. part of the Learning, conversation. learning isn't learning सीखना. मुझे क्या पता आफिया, मैं तो एंड में बता अभी थोड़ी बताऊंगी, अभी तो ऑडियंस बताएंगे, तो हमारे पार्टिसिपेंट्स बताएंगे. ओके आफिया, नाउ आई एम गोइंग टू बी अ लिटिल लिरिकल एंड दैट इज बिकॉज द थिंग इज, अगर ये सेकंड पार्ट ना होता, when I was actually when I read the first part of this research, I was frustrated, I did not like it at all because it was challenging me, it was against my practices and all that stuff. But when I moved to the second part, instantly I know this is right. Instantly I know it from, you can say I know it from my blood, that this is, yes, this is, because I know it from Rumi, who called it the wound where light enters. I actually knew it Wow. by Socrates' rebelliousness, and I actually knew it जब इकबाल ने कहा तू राह नवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, and I actually know it जब आबदा परवीन ने कहा कि मेरी बेदारियों को ख्वाब जुलेखा ना बना, and I actually know it, अगर मैं आसान, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स कहती हैं मैं आसान ज़बान नहीं इस्तेमाल करती, so in the simple language, no pains no gains, right? So the True second that. part of the research says decreased performance, yes, decreased performance leads to high and increased learning. Right? अब ये क्या सीन है? Yes, decreased performance because, और इसको टर्म क्या academic दी है? To induce desirable difficulties. जो टर्म है, because this research is from Nicholson, Sedestrom और Dr. J. York जिनका नाम है. I'll share with you the link जो आप सबके साथ please audience के साथ share कीजिएगा. And that उन्होंने डॉक्टर रॉबर्ट बेजॉक उन्होंने कहा, this term is called desirable difficulties. अगर चैलेंज के वक्त, अगर परफॉर्मेंस के वक्त, अगर परफॉर्म करते वक्त देर आर नॉट सफिशिएंट चैलेंजेस इंड्यूस्ड, खुद से अगर आप सफिशिएंट चैलेंजेस या डिफिकल्टीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे, द लर्निंग डज नॉट हैपन. Why? Because शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी की प्रोसेशन तभी होती है, उसका प्रोसेसिंग तभी होती है जब एक स्पेसिफिक डिफिकल्टी लेवल से आपका ब्रेन गुजरता है. और डॉक्टर डी एन जोक, माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट, शी सेज one of the parts of the brain only works
when you make a mistake, when you actually struggle with something. So that's the only the part only works. So that is why I said it's the wound where light enters. It's the struggle basically जो कि that helps you learn. वो पूरी जिंदगी हम ये सुनते आ रहे हैं ना कि बुल्ले शाह का कलाम है इश्क कमाना औखा. So that's how it is. It's not easy to learn anything until unless you actually pass by a certain level of difficulty. These are called Well, Marvi, desirable what is challenges. very interesting is that probably based on this theory and based on all this study, हमारे यहाँ के लोगों के तो फिर वो पार्ट कभी भी काम नहीं करता होगा. Yes, Afia, and it's not with Hamari Haki Log actually, because our brain is designed to actually seek easiness. इसको अच्छा लगता है कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेट, इसीलिए हम लोग एस्केलेटर्स इजाद की रादर देन स्टेयर्स, और इसीलिए हम लोगों ने जो है वो कुक्ड फूड इजाद करना शुरू कर दिया. एंड इफ यू कैन सी अराउंड अस, बिकॉज वी लुक फॉर इजीनेस, बिकॉज हमारा ब्रेन डिजाइन ऐसे है. शायद इसीलिए अल्लाह ने इसको जिहाद नफ्स कहा और अकबर जहाद कहा, बिकॉज अपने नफ्स के अगेंस्ट जाके, जिस पर्पस की तरह से आपका डिजाइन हुआ है उससे अगेंस्ट जाके आपने सीखना होता है. सो जो मंजिल है विच इज लाइक सीखना, आहा आई जस्ट सेड द आंसर वेरी बैड, मगर जो मंजिल है वो एक्चुअली वो कभी मिलती है आपको when you pass by that actually time वो जब उधर से गुजर जाते हैं. So then actually you get this learning that's happening in your brain. All right, so this is the second part of the brain. अच्छा, आप यहाँ पे दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद I'll give you the final suggestions कि assessments होनी कैसी चाहिए. That gives us the actually the true impact, the true scenario of learning. So but उससे पहले जरूरी चीज ये आप क्या, बिफोर यू अंडरस्टैंड, अब आप ये ना हो कि इसके बाद टीचर्स जो है ना वो मुश्किल मुश्किल टास्क और वो ये कहें कि अच्छा हमने 5वीं जमात का सवाल देने की बजाय हमको 10वीं जमात का सवाल देते हैं, एंड दैट मीन्स दैट द टास्क इज डिफिकल्ट एंड द चैलेंज इज एक्चुअली इंड्यूस्ड. सी, you have to prepare students, equip students before you induce any challenge or before you induce any difficulty for them in a certain task. आपने प्रिपेयर करना होता है, आपको खुद को भी प्रिपेयर करना होता है. अगेन पहले आपकी लर्निंग हो रही होती है और आपने बच्चों को भी प्रिपेयर करना होता है that they are able, शुरू से ही they should not take frustration, they should not take struggle as a symbol of failure, but as a symbol of learning. If I am struggling, I am learning, right? But अगर हम लोग शुरू से ही बताएंगे अल्लाह तुम इरेज कर रहे हो, तुम मिटा रहे हो, तुम दोबारा लिख रहे हो, समझ कुछ नहीं आ रही, and that means we actually install this behavior, this mindset in students that अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो तुम तो गए, तुम तो फेलियर हो, राइट? तो तुम you're failure. So you have to equip students not with the mindset only, but with the specific skills. जिस किस्म का चैलेंज और जिस किस्म की डिजायरेबल डिफिकल्टी आप इंड्यूस करने लगे हैं वहां पे, उससे पहले उनकी प्रिपरेशन होना जरूरी है. एंड देन it is actually going to be a desirable difficulty. Desirable because it's going to produce desirable long term retention, and difficulty of course because it's a challenge and it's like you are going to be उनके लेवल से ऊपर की आप उनको चीज दे रहे होते हैं. So this is a very important point. The teachers preparation करनी है बच्चों की to actually equip them with the skill to cope up with that specific challenge. अब आ जाते हैं आफिया, if you want me, do we have time? I have Yeah, we still have time, but I don't know. There's a question that's coming to my mind, and I think whatever you're saying, I will not be able to actually process it unless I ask that question. So may I? please. Yeah, please. You're rightly talking about giving them the right level of challenge and preparing them for that challenge. But how as teachers do we determine that this is the type of preparation that is required, or whether they are ready now for the challenge or not? How will we find that out? Yeah, perfect question, Afia, because अभी जो assessment की मैं आपको examples देने लगी थी, these are basically the kind of challenges that अब challenges से मेरा मुराद क्या? Another, by the way, this research also links to another research which is like optimal challenge level for students, and I want I've read that, every yes. educator, all teachers who are listening to this one must actually look into that research which is called optimum challenge
जो है level, which is like Hmm. OCT, right? That's a very interesting research for teachers to understand कि what actually is the challenge level that you must give to the teachers. मगर अगर मैंने अभी बात करनी शुरू की तो बहुत लंबी हो जाएगी उसके ऊपर. आफिया, the thing is challenge level का मतलब ये होता है. अच्छा, challenge level और desirable difficulties जिनकी मैंने बात की, अगर मैं उनको explain कर Hmm. दूं शायद आपका question भी merge हो जाएगा, right? Hmm. डॉक्टर रॉबर्ट जॉक, जिनकी ये रिसर्च है, व्हाट ही सेज इज दैट डिजायरेबल डिफिकल्टीज जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनको आपने इंड्यूस करना है, वो हैं क्या, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजायरेबल डिफिकल्टीज. उनमें से पहली चीज है स्पेस्ड प्रैक्टिस, यानी कि ब्लॉक सेशंस देने की बजाय, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप एक लेसन को आप बहुत लंबी देर तक खींचे. हमारी कोशिश ये होती है कि एक चैप्टर को Hmm. फटाफट फिनिश करें और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाए. सो ही सेज स्पेस्ड प्रैक्टिस, यानी कि आप लेंथ लंबी कर दीजिए, स्पेसिफिक जो आपका एक लर्निंग कॉन्सेप्ट है उसकी लेंथ लंबी कीजिए, सो दैट द चाइल्ड इज लर्निंग द कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप. फर्दर मोर, जब आप उसकी लेंथ लंबी करेंगे तो आप फ्रीक्वेंटली उसको बार बार विजिट कीजिए. दैट्स व्हाट वी कॉल स्पेस प्रैक्टिस, सो दैट when you are going to be coming back to the same kind of concept again and again in multiple ways that you are going to be presenting to the child, उस केस के अंदर लॉन्ग टर्म रिटेंशन जो है वो ज्यादा होती है, रिकॉल आसान हो जाता है, रिट्रीवल प्रैक्टिस आसान हो जाती है, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल स्पेस्ड प्रैक्टिस. सेकंड एग्जांपल दैट ही हैज गिवन इज इंटरलीविंग प्रैक्टिस. फॉर एग्जांपल, आप फिजिक्स में स्पीच पढ़ रहे हैं, राइट, और आप उस Hmm. कैलकुलेशंस पढ़ रहे हैं. You can have actually the same kind of concept going on in maths as well. आप Hmm. साइंस Hmm. को भी उसके साथ मिक्स कर सकते हैं. सो इंटरलीव्ड प्रैक्टिस, विच इज लाइक एक कॉन्सेप्ट के मल्टीपल डायमेंशंस इन मल्टीपल सब्जेक्ट्स, वो आप जब एक साथ पढ़ाते हैं तो ब्रेन के पैटर्न्स मल्टीपल तरह के डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. एंड दोज True. पैटर्न्स Yeah. children, yes, it is difficult, so that's why it is called it's called desirable difficulties. Another thing is, Afia, डिफिकल्टी, ये चैलेंज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि लेवल अप कर दिया क्वेश्चन का. फॉर एग्जाम्पल, मुझे मुझे प्रैक्टिकल के लिए 4-5 मटेरियल चाहिए. सो व्हाट वी डू इज, बड़ी प्यार से सजा के क्लासरूम में वो सारा मटेरियल रखते हैं कि बच्चे जाए एंड दे pick up all their stuff and they are very easily able to perform well, right? What if we actually mix the material? What if we ask the children to prepare the material? What if we ask the children to find the material, to sort the material, to Hmm. reorganize the material? So ये भी एक डिफिकल्टी है कि सीखना तो है, उन्होंने वो प्रैक्टिकल करना है. However, while we are going through that phase, they are actually passing through a difficulty, a struggle in terms of collecting the material and all that stuff. There is another difficulty that we can introduce, is reduce facilitation during teachers. फौरी फौरी जाके, हाय मेरा बच्चा जवाब नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ, तो फौरी तौर पे आप जाके जो जवाब दे देते हैं, फौरी तौर पे आप जाके let the child struggle to get the answer. So these are the kind of difficulties that I was talking about. So I'm sure you have got your answer as well कि ये वो challenges है. अच्छा, इनसे इनको cope up करने के लिए आप में character building वाली stuff जरूर आ जाता है टीचर्स की तरफ से, माइंडसेट बिल्डिंग जरूर आ जाती है. अदरवाइज इसके लिए कोई एकेडमिकली स्किल्स बिल्ड करने की जरूरत नहीं होती है, राइट? सो दीज चैलेंजेस आर बेसिकली इन टर्म्स ऑफ लर्निंग. अगेन, अगर इल्म हासिल करो होता है तुम्हें चीन ही जाना पड़े, तो हमने चीन को चीन समझ लिया है. इट्स बेसिकली the kind of difficulty that you pass through to get that specific learning. So now if I have time, I quickly would like to move on to the second last जो part था जो मैंने promise किया था, and that is what kind of assessments actually would help Let's teachers. go through that very briefly. Yeah, I'll just quickly say go. See, assessment, Afia, this is my favorite thing. Assessment doesn't only mean कि आप बच्चे की understanding check करिए. What if we can actually make assessment a tool of learning as well? हम understanding तो check कर रहे हैं, मगर it's the learning tool as well. Rather than giving the question answers, can we actually give students certain projects to work upon? Can we ask them to present something? Can we, मैंने Yes. बहुत सारी लंबी लिस्ट बनाई हुई है. Can we ask them to prepare case studies? Can we ask them to explain in their own language? Can we ask them to actually discuss with the peers? Can we ask them to teach? Can we ask them to actually help other students? Aren't we able to actually, these are the assessments, हम इसी assess, अब ये short term performance तो होगी, मगर इस पर learning जारी होगी. So these are the kind of assessments. हमें basically हमारा assessment pattern change करने की जरूरत है. Again, that will change the whole scenario. And I'm now over to you for the question answer session. अभी बहुत सारी थी, but I'm just pausing it over here. Thank you so much. Well, let me just check if we have received any questions.
And while I do this, I would like to uh, I would like to thank you, because I think there were a lot of very encouraging comments on the chat. But as far as the questions are concerned, we don't ask a lot of questions as a nation. I hope So you. I have something to then say to teachers. Just let me know when we have the last 2 minutes to say to buy to teachers, because I do have something really important to say. If we do not have any questions, let me know when I can say those. Use those 2 minutes. Please go ahead. Please go ahead. Perfect. So, Afia, the thing is, we have 35 million students in school, right? 35 million individuals in school पढ़ाई कर Mhm. रहे हैं. अगर लर्निंग की किसी ने ये डेफिनेशन दी है, यस, लर्निंग इज सीखना और परफॉर्मेंस इज कारकर्दगी. 35 मिलियन बच्चे रोजाना सीखते हैं गलियों पे कचरा नहीं फेंकना. 35 मिलियन स्टूडेंट्स रोजाना असेंबली में दुआ भी करते हैं, दूसरों का ख्याल रखने की बात भी करते हैं. 35 मिलियन नो, अभी मैंने स्कूल स्टूडेंट्स काउंट किए, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट्स की बात ही नहीं हो रही है. और येट वी डू नॉट सी एनी इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. सो कोई There's गड़बड़ है. something going wrong somewhere. Yeah, exactly. There's something going wrong. And the first one thing that I just explained today is कि हमारी असेसमेंट ऑफ लर्निंग ही ठीक नहीं है. हम शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को तो असेस कर लेते हैं, जी मुझे समझ में आ गया कचरा नहीं फेंकना, मगर लॉन्ग टर्म लर्निंग रिटेंशन को नहीं करते. And yes, I would like to say I'm a child A teachers, and yes, I perform really well in the class, and yes, I am your dream child. However, I wish you would have told me that life is not a bed of roses. I wish you would have told me कि फटाफट से वर्कशीट कर लेने से जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी. And yes, I'm a child B teachers, and I can never be your dream student. But please remember, I am learning, and I'm learning for life. That's it. That's it. That's what I wanted to say, Afia. Thank you so much, Marvi. And whatever you are saying is something which is so close to my heart, and I feel a lot of Yeah. audience says the same, because what happens is that in the practical life, and over the years, I've seen my students now and entering practical life and doing jobs, and I've seen that the child A was not able to perform so well in practical life and at job, whereas the child B was really good at doing those things, because he has been struggling, he had that challenge, and that problem solving situations were there for that child, which is what we deal with in everyday life. The paradox of education. That's what you call the paradox of education. Absolutely, absolutely. So, like what you were saying, this is something very, very important. And I'm so glad that you chose this subject, because this goes across the board. It's related to every discipline, every subject area. It is not restricted to any one subject. Therefore, we all, in fact, I would say it's related to life. We as parents To also need to corporate consider Afia, these things. कॉर्पोरेट सेक्शन जहां पे हम लीडरशिप की बात करते हैं, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस बात करती हैं कि वी अलाउ आवर एम्प्लॉयज टू एक्चुअली लर्न एंड ग्रो, और वहां पे उनकी परफॉर्मेंस, ऑल वी डू हैव इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट इंडिकेटर्स एंड नॉट लर्निंग मेजरमेंट इंडिकेटर्स. केपीआईज होते हैं हमारे पास, बट उसके अलावा एलपीआईज नहीं होते, लर्निंग मैनेजमेंट इंडिकेटर्स नहीं होते, मेजरिंग इंडिकेटर्स हमारे पास. सो वी एक्चुअली नीड टू वर्क, वी नीड टू थिंक अ लॉट दैट जो कहते हैं ना, अपनी मोहब्बत के मुनाफी तो नहीं जा रहे, अपनी एफर्ट्स के मुनाफी तो नहीं चाह तो रहे हैं कि हम बच्चे सीखें, लर्न करें, और फिर हम उनको उनकी कारकर्दगी पे सिर्फ असेस करें. सो आई हैव टोल्ड यू कि इट्स द अदरवाइज, एग्जैक्टली द अदरवाइज. एंड बाफिया, लास्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर इज, आपको पता है ये रिसर्च अर्ली 90s से स्टार्ट हुई थी, मगर इससे पहले कल आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल 200 years ago, 200 साल, 1800 से educators are trying to have this distinction कि किसी तरीके से पता चल जाए परफॉर्मेंस अलग चीज है और लर्निंग अलग चीज है. 200 साल से कोशिश की जा रही है, बट जस्ट बिकॉज शॉर्ट टर्म इज इजी टू असेस, इजी टू सी, विजिबल होती है, वो कहते हैं ना अल्लाह नजर आ जाता है, तो वो वाला हिसाब है ना, वो नजर आने वाली चीज है. सो दैट्स वेयर 200 साल से तो कोशिश की जा रही है, बट अगेन दिस इज माय एफर्ट, दिस इज TLA's effort for everyone, all the teachers out there. At least सोचिए, at least think about the assessments that you are designing.
Thanks, Marvi. And I will talk to the teachers now. कि whatever Marvi was saying, probably जब आप उसको पहली दफा सुनेंगे तो आपको लगेगा this is something impossible. We can't do it. हमारे पास तो scheme of work को complete करना है, curriculum पूरा करना है. But you can bring about small changes in your classroom. Nobody can stop you from doing that. So you have to keep all these things in mind. And I would like to thank Marvi again for doing this session and especially choosing a topic because TLA is for everyone. This is a unique quality of TLA that we bring together people from all disciplines and all areas related to teaching and learning so that we can share our point of view, so that we can share our knowledge with each other and benefit from each other. Thank you. Hafiz.